control and coordination. Neural system. So neural control and coordination are actually so let's come to the classification of the neural system or nervous system. Nervous system or neural system. One is central neural system. It is CNS. So under the CNS, we will discuss about the brain and spinal cord. Second is, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? What is the meaning of the central nervous system and what is the meaning of peripheral nervous system? Central nervous system मतलब बॉडी के सेंट्रल पार्ट में कौन? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जैसे सपोज ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. ये सेंट्रल पार्ट हो गया. All the nerves which are associated with the brain and spinal cord will be called as what? The peripheral. Periphery मतलब apart from the central. So peripheral nervous system में आएगा those nerves which are associated with the brain, that is cranial nerve, and the nerves associated with the spinal cord, that is spinal nerves. So all the cranial nerve and spinal nerve comes under the peripheral nervous system. अब डिपेंड करता है कि ये cranial nerve and spinal nerve का फंक्शन क्या है, whether they have supplied to the voluntary organs or it is supplied to the involuntary organs. अगर ये voluntary organ को सप्लाई किया है, then it is called as somatic neural system. अगर ये involuntary organ को सप्लाई हुआ है, then it is called as autonomous nervous system or autonomic nervous system. So peripheral nervous system को हम क्लासिफाई करेंगे. The peripheral neural system. Nerves to and from brain and spinal cord is called as peripheral neural system. उसके अंदर दो पार्ट, जैसे कि अभी मैंने बोला आपको, एक है सोमैटिक and that is nerves to and from voluntary organs. Are called as somatic neural system, and this is autonomic neural system. Which include the nerves to and from involuntary organ. And involuntary organs को कंट्रोल करने के लिए जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, that is again of two types. पढ़े हैं ना? एक है
सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। तो इसीलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑल द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व कम्स अंडर, राइट। एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में भी वही क्रेनियल स्पाइनल आएगा, ऑटोनोमिक में भी क्रेनियल स्पाइनल आएगा। ये जनरल आइडिया आपको मिल गया। Sympathetic will control the involuntary organs during the stress condition or during the normal condition, and parasympathetic during the normal conditions, right? Before starting the brain and spinal cord, we need to start the conduction of nerve impulse. So मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगा कि हम लोग जब टिश्यू चैप्टर पढ़े थे, नर्वस टिश्यू, आपको याद है नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन, nerve fiber, nerves. The difference between these three, neurons में होता है naked axon, encysted axon will be called as nerve fiber, bundle of nerve fiber is called as nerves, held together by connective tissue. The second point is nervous tissue is made up of different type of, that is cells. Number one, nerve cell called as neuron. Second था non-nervous cell called as neuroglia. तो non-nervous cells neuroglia का function क्या था? Act as a insulator between the two neuron, packaging, nutrition, blood-brain barrier, बहुत कुछ था, याद है? Apart from that, that also contains the neurosecretory cells only and exclusively present in the hypothalamus. याद है? Neurosecretory cells are those neurons which capable to secrete hormones. And आपको पता है कि nervous system में ये न्यूरो हार्मोन सिर्फ एक ही ग्लैंड सिक्रेट करता है, वो है hypothalamus. And that is why hypothalamus only contains neurosecretory cells. Plus, nervous system also contains ciliated epithelium called as ependymal cells. तो एपेंडाइमल सेल एक नर्वस है कि नॉन नर्वस है? सिर्फ नर्वस है न्यूरॉन एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, बाकी जो एपेंडाइमल सेल हो गया प्लस न्यूरोग्लिया हो गया, ये नर्वस है कि नॉन नर्वस है? नर्वस। तो इसीलिए डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में तो दिया है, बट इट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट कि टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। एनसीईआरटी का लाइन है कि a group of similar type of cells together to form tissues. It is actually wrong. It may be what similar, may be dissimilar. जैसे कि नर्वस टिश्यू में हम लोग देखें कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल तो नहीं है, डिसिमिलर है। आप एपिथेलियल टिश्यू देख लीजिए, एपिथेलियल टिश्यू में कंपाउंड एपिथेलियम देखिए, कंपाउंड एपिथेलियम में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल और ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स। आप कनेक्टिव टिश्यू देख लीजिए, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा, मास अप और ग्रुप ऑफ सिमिलर के डिसिमिलर। समझे? We are coming to the next topic, conduction of nerve impulse. Origin and conduction of nerve impulse. Origin and conduction of nerve impulse. First of all, we need to, what is ion channels? The channels, ion channels are always protein channel. Ion channels मतलब ये channel का काम क्या है ना, to allow the ions
एंड ये चैनल किससे बना है? प्रोटीन से बना है. So ion channels is transport ions across the membrane. So ion channels are made up of protein which transport the ions to cross through the membrane of the cell is called as ion channels. And ये दो टाइप का है. One is leak channel. दूसरा है voltage gated channel. Voltage और gated channel. Leak channel, why it is called as leak? Leak मतलब continuous. मतलब those channels which are remain always open. The leak channels are those which always open are called as leak channel, but voltage or gated channel only open in response to specific stimulus. And a specific stimulus को हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं उसको? Threshold stimulus लिखते हैं कि नहीं उसको? So when the threshold stimulus will come, in response to that only this channel will open, then it is called as gated channel or voltage gated channel. So voltage gated channel का आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग जितने भी चैनल्स पढ़ते हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल, all these are gated channels. तो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करने के लिए लिखा है जानबूझ के, and that is what? Now that is sodium channel, potassium channel, sodium potassium. तीन अलग अलग चीज है. Sodium channel will always allow sodium only. Potassium channel only potassium, but sodium channel, potassium channel जो common है, वो both sodium potassium दोनों के लिए होता है. और खेल वहीं पे, कंफ्यूजन यहीं पे, क्वेश्चन यहीं पे. We will discuss the impulse conduction in three different heading. देखिए impulse जो conduction होता है, एक तो होता है through the axon, and axon may be myelinated, may be unmyelinated. Myelinated हुआ axon तो अलग टाइप का मैकेनिज्म होगा, unmyelinated हुआ तो अलग होगा, and across the synapse from one neuron to another neuron, that is also something different. तो हम लोग फर्स्ट आते हैं the conduction of nerve impulse in unmyelinated nerve cells. पहले ए हेडिंग की हम लोग अनमाइलिनेटेड, देन हम लोग बी जाएंगे माइलिनेटेड, देन सी जाएंगे अक्रॉस साइनप्स. फर्स्ट वी आर कमिंग टू अनमाइलिनेटेड नर्व. Supposed to be this is exolemma, this is exoplasm, yeah.
So outside the exolemma, it is extracellular fluid or ECF. Outside the exolemma, it is called as extracellular fluid or ECF. And exoplasm में actually with more K plus ion and negative charged protein. What are present more in the exoplasm? When it is in resting condition. रेस्टिंग जब कंडीशन में होता है न्यूरॉन और नॉन फाइबर, तो एक्सोप्लाज्म में ज्यादा क्या है? K प्लस एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन इन कंपैरिजन टू ECF. ठीक. Now that is the reason why maximum K plus is comes out. तो यहाँ पे K प्लस का इनफ्लक्स हुआ कि इफ्लक्स हुआ? K प्लस इफ्लक्स. हाई टू लो कि लो टू हाई? हाई इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, लो आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म, दैट इज ECF. तो ये पैसिव हुआ. Similarly, a very small quantity of Na plus also comes in. Very small quantity of Na plus. ये सारे के सारे तो K plus channel था. Some of the Na plus channel is also being opened, but it is very less quantity. So some of the Na plus is moving in. तो Na plus यहाँ पे क्या हुआ? Influx हुआ. तो Na plus ज्यादा बाहर है कि नहीं? अंदर Na plus कम है, क्लियर है? तो फिर Na plus influx is passive or active? Again it is passive. बट अगर हम लोग Na plus K plus दोनों की बात करें, अभी हम लोग बात किए थे Na plus अलग चैनल है, K plus अलग चैनल है, और एक चैनल है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम चैनल. समझे कि नहीं? And this sodium potassium channel, they will move both sodium and potassium. And here it is, ये जो सोडियम पोटेशियम चैनल है, ये करता है 2 K plus influx. So in return 3 Na plus out. तो आप बताइए, यहाँ पे Na plus का इफ्लक्स हो रहा है, K plus का इनफ्लक्स हो रहा है. तो K plus लो टू हाई हुआ कि हाई टू लो? आउटसाइड लो इनसाइड हाई. मैंने इसीलिए लिखा एक्सोप्लाज्म में ज्यादा क्या है? K plus ज्यादा है, आउटसाइड कम है. तो आउटसाइड से इनसाइड K plus मूव कर रहा है, लो टू हाई. सेम फॉर द सोडियम आल्सो. सोडियम इनसाइड ज्यादा है कि कम है? बाहर ज्यादा है, लो टू हाई. तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं ये जो सोडियम पोटेशियम चैनल है, ये एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ? Question is, during the resting condition, K plus efflux out passive. ये है आपका क्वेश्चन जो मिलेगा. So during the resting condition, K plus efflux out passively through exolemma.
अगर आपको पूछा कि सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल अगर पूछ दिया तो ये आपका थर्ड वाला आ जाएगा, राइट? इट इज मोर परमेबल टू सोडियम और लेस परमेबल टू सोडियम। 3Na plus 2Ka plus, तो सोडियम पोटेशियम चैनल इज मोर परमेबल टू, लेस परमेबल टू। लेकिन आपको मैंने वहां पे एक पॉइंट लिखा है कि एक्सोलेमा ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन K प्लस इफ्लक्स मोर और लेस, यहाँ पे K प्लस इफेक्ट आउट होता है मोर और लेस, मोर है कि नहीं? अब Na प्लस देखिए बहुत ही लेस है, Na प्लस का क्वांटिटी देखो इन्फ्लक्स हो रहा है बहुत ही कम, लेकिन K प्लस का इफ्लक्स ज्यादा हो रहा है कि नहीं? अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन ये है, अगर आप कंपेयर करें तो इनसाइड विल बी मोर और आउटसाइड विल बी मोर, कहां पे पॉजिटिव आयंस का क्वांटिटी ज्यादा हो? आउटसाइड और इनसाइड? आउटसाइड पॉजिटिव आयंस का क्वांटिटी ज्यादा होगा, then it is indicated by what? Na outside positive and inside what? Negative. तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है with more positive ions, and negative का मतलब क्या है? with less positive ions. Means negative का मतलब negative नहीं है एंड पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, इट इज दोनों ही पॉजिटिव आयन के रेस्पेक्ट में। इफ इट इज मोर पॉजिटिव आयन देन इंडिकेटेड विद पॉजिटिव, इफ इट इज लेस पॉजिटिव आयन देन इट इज विद नेगेटिव। सो आउटसाइड मोर पॉजिटिव आयंस और लेस पॉजिटिव आयंस, मोर पॉजिटिव है दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड उसके कंपैरिजन इनसाइड क्या हुआ? लेस पॉजिटिव आयंस, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। दिस condition of the difference in the charge inside and outside is called as polarization. What is the difference between the polar and non-polar? अगर मेम्ब्रेन के दोनों साइड में सेम चार्ज होगा तो नॉन पोलर, अगर मेम्ब्रेन के दोनों साइड में डिफरेंट चार्ज हुआ तो पोलर। तो यहाँ पे इनसाइड नेगेटिव होगा, आउटसाइड पॉजिटिव होगा, देन इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब देखिए इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा, आउटसाइड नेगेटिव, अल्टर हो जाएगा, then it is called as depolarization. Reversal of polarization is called as what? Depolarization. फिर से नॉर्मल, फिर से अगेन पोलराइज्ड हो जाएगा तो रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, सब स्टार्ट होता है यहीं से। एंड व्हाट इज द चार्ज? यहाँ पे चार्ज होता है ऑलमोस्ट वी कैन से -70 मिलीवोल्ट, -70। तो पोलराइजेशन का चार्ज क्या है? -70 मिलीवोल्ट, एंड दैट इज एक्चुअली वैरी, ये वैरी करता है। हम लोग एवरेज लिए हैं बिकॉज एवरी नॉट फाइबर डजंट हैव द सेम चार्ज, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एवरेज लिए हैं, दैट इज व्हाई इट इज -70, बट इट कैन बी वेरी फ्रॉम -40 टू -90। ये वेरी कर सकता है, -40 to -90 millivolt, it can be vary, ये नॉट टू नॉट वेरी करता है। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द सेकंड स्टेप, सपोज टू बी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
पॉइंट ए में क्या कंडीशन था? पॉइंट ए में क्या कंडीशन था? पोलराइजेशन की डीपोलराइजेशन। ओके, नाउ उसी पॉइंट ए पोर्शन में थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रीच करेगा। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस विल रीच एट द पॉइंट ए, एंड ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का जो minimum strength of stimulus we have discussed, the minimum strength of stimulus which need to excite a nerve or excite a muscles is called as what? No, threshold stimulus. तो मैंने यहाँ पे चार्ज कितना लिया है? नॉर्मल पोलराइजेशन पोलराइज्ड नॉर्व का चार्ज कितना लिया? -70। तो -70 if it is the normal polarized charge of a nerve fiber, then the threshold stimulus must be less 10, मीन्स यहाँ पे -70 लिया है, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इस नॉर्म के लिए कितना होना चाहिए ना? -55 टू -60 मिलीवोल्ट। ठीक, अगर यहाँ पे हम -90 लेते तो ये कितना होता? -80। अगर यहाँ पे हम -80 लेते तो यहाँ पे होता -70। मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस सबके लिए कॉमन नहीं है। Threshold stimulus is a minimum strength. So what is this? Is the minimum. What is the minimum here? ना minimum जितना चार्ज होगा उससे कम 10 होना चाहिए, 10 माइनस। क्लियर है? And that is why every threshold stimulus is not similar for every nerve fiber. हर एक nerve fiber का अलग अलग polarized charge है, तो उसके लिए threshold stimulus भी vary करेगा। So here as we are taking the -70 the average, that is why we are taking the threshold stimulus as -55 to -60 millivolts. So when this threshold stimulus will be reached at the point A site, अल्टर हो जाएगा। क्या अल्टर होगा ना? K प्लस चैनल जो ओपन था ना, अभी इफ्लक्स कर रहा था K प्लस, वो स्टॉप हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम चैनल जो अभी इन्फ्लक्स ऑफ K प्लस एंड इफ्लक्स ऑफ Na प्लस था, वो भी स्टॉप हो जाएगा। जो ऑलमोस्ट नील था ऑन सोडियम, वो परमेबल हो जाएगा। So ultimately we can say the maximum quantity of what is actually influxing. क्या एंट्री किया? Na plus influx. अगर Na plus influx है तो ये लो टू हाई हुआ कि हाई टू लो हुआ? बाहर तो हाई है ना Na plus, तो ये पैसिव हुआ कि एक्टिव हुआ? पैसिव। तो पैसिव मतलब सिंपल डिफ्यूजन। तो Na plus क्योंकि इन्फ्लक्स हुआ, तो inside the exoplasm the quantity of the ions will increase or decrease? The quantity of the positive ions will increase or decrease? Increase होगा, and that results जो -70 था वो धीरे धीरे -60 -50 -30 -10 माइनस करके सब जीरो में आ जाएगा, फिर +10 +20 and approximately they will reach what ना? +30 millivolt. कहाँ तक पहुंचेगा ये? +30 millivolt. What is the charge of the depolarized knob? Depolarized knob का चार्ज कितना हुआ? पोलराइज्ड नॉब का चार्ज क्या था? -70। डीपोलराइज्ड नॉब का चार्ज कितना हुआ? +30 मिलीवोल्ट। तो इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हुआ कि इनसाइड नेगेटिव चार्ज हुआ? अभी इनसाइड हो गया पॉजिटिव, एंड उसके कंपैरिजन में आउटसाइड क्या होगा? लेस पॉजिटिव आयंस की मोर पॉजिटिव आयंस, तो आउटसाइड हो गया नेगेटिव। Now this is called as action potential, means depolarization. So depolarization or action potential
जिस पॉइंट में अप्रोच करता है उस पॉइंट का चार्ज हो गया +30 मिलीवोल्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ Na प्लस इनफ्लक्स पैसिवली और Na प्लस इनफ्लक्स एक्टिवली। यही सब तो क्वेश्चन है, पैसिव एक्टिव इनफ्लक्स रिफ्लक्स, यहीं पे तो हम लोग फंसते हैं ना। हाँ, फंसना नहीं। बाकी आप पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी ऑलरेडी किस कंडीशन में है? पॉइंट बी अभी किस कंडीशन में है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इट इज रिच ओनली एट द साइट ए, नॉट एट साइट बी। तो पॉइंट बी will be in polarized or depolarized? Polarized. तो यहाँ पे अगर पोलराइजेशन है तो जैसे कि नॉर्मल हम लोग ऊपर देखे थे, इनसाइड क्या होगा ना, नेगेटिव होगा, आउटसाइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चार्ज कितना है ना, -70 मिलीवोल्ट। मूवमेंट स्टार्ट होगा। डायरेक्शन ऐसे रहेगा, वो धीरे धीरे ऐसे अल्टर होके आगे चलेगा, ठीक है, ऐसे करके आगे चलेगा। तो कंडक्शन ऑफ इंपल्स टू बी पासेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं, मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो इंपल्स है, अभी हमने दिखा, हेडिंग क्या लिखे थे हम लोग, ऑरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नॉर्म इंपल्स। ऑरिजिन कैसे हुआ मैं दिखा दिया पॉइंट ए में, अब कैसे कंडक्ट होता है वो दिखा। नाउ द depolarization which is present at point A will now comes to किस पोजीशन में आएगा, ये मूव करके आगे आएगा, यूनिडायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है। So that will move from point A to point B. तो point B क्या हो जाएगा, depolarization। तो point A क्या होगा, repolarization। कंप्लीट है डायग्राम आपका, जल्दी। तो पास करेगा ना अभी, तो स्प्रेड तो होगा, कहीं तो रीच करेगा ना एक जगह पे। ए और बी को डिवाइड कर दिया, उस इससे मैं डिवाइड इसीलिए किया हूं ताकि पता चले कि एक जगह पे वो दे विल नॉट रीच एट ए टाइम इन एवरी प्लेस। स्टिमुलस तो एक ही जगह पे, यहाँ पे मैंने टच किया, लेकिन फीलिंग तो हम लोग पूरा बॉडी में कर रहे हैं। स्टिमुलस तो रीच एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, लेकिन वो स्प्रेड करेगा तभी तो फील करेंगे ना, तो स्प्रेड को ही तो कंडक्शन बोलते हैं। अभी तो स्प्रेड करेगा, स्प्रेड विद इन नो टाइम हो जाता है, विद इन नो टाइम दैट विल बी स्प्रेड। नहीं तो हार्ट का जो मसल्स है वो एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, क्लियर है? प्रेसिडेंट कंडक्शन और नॉर्म इंपल्स में 99% बच्चों का प्रॉब्लम है। क्या मैं ट्रू हूं? इसमें कुछ आपको अभी तक लगा कि इसमें बहुत कंफ्यूजन, क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है? पैसिव एक्टिव का कंसेप्ट तो पता है भाई, हाई टू लो टू हाई। चले आगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस ये डायग्राम नजर में होना चाहिए। हम डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट ए
point B, now it is point C. हम लोग जो भी देख रहे हैं पॉइंट ए का देख रहे हैं. पॉइंट ए फर्स्ट डायग्राम में क्या था? पोलराइजेशन. पॉइंट बी इन द पॉइंट ए इन द सेकंड डायग्राम चेंज होके डीपोलराइज्ड हुआ बिकॉज ऑफ द अराइविंग ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. अब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रीच करने के बाद ये स्प्रेड करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मूव करेगा, कंडक्ट करेगा. नाउ द पॉइंट ए बिकम्स व्हाट? अगेन पोलराइज्ड, कॉल्ड एज रीपोलराइज्ड. लेकिन पॉइंट बी अभी क्या हो जाएगा? डीपोलराइज्ड. तो पॉइंट सी अभी भी किस कंडीशन में है? पोलराइज्ड. So again polarization simply means the polarization again start. And polarization again start होगा तो फिर से K plus efflux होगा कि नहीं? Again the K plus efflux will start. Everybody see here. यहाँ पे जो K plus efflux होता है, remember, it is for more time. नॉर्मल पोलराइजेशन में जितना टाइम के लिए K plus चैनल ओपन रहता है to efflux the K plus out. Here during the repolarization or again polarization, the K plus channel will be open for more time period. So more K plus will efflux out or less? More. था कितना? प्लस 30 मिलीवोल्ट डीपोलराइजेशन. अब K plus efflux स्टार्ट हुआ तो ये प्लस धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ फिर से आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आयंस का क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है. तो प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 0, -10 -20 ऐसे करते 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 -70 तक रीच कर गया. लेकिन -70 के बाद भी ये K plus स्टॉप नहीं होगा because already I told you it is being efflux out for more times. So that is why more K plus will efflux out. अगर ज्यादा K plus बाहर चला जाएगा तो inside will be more negative or less negative. नेगेटिव की तो हम लोग पोलराइज बोलते हैं. So more negative होने की वजह से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वो हो जाएगा -90 मिलीवोल्ट. Instead of -70 that will be -90 मिलीवोल्ट. एंड ये हाइपर पोलराइजेशन इसीलिए बोलते हैं because it is not normally polarized. It is obviously it is polarized. Obviously it is repolarized, but it is polarization is more than normal. That is why it is called as what? Hyperpolarization. So hyperpolarization is due to what? Question पूछेगा. K plus efflux passively, K plus efflux that is influx passively, K plus efflux actively. क्या होगा आंसर? K plus efflux passively. ये पैसिव है. तो इनसाइड कितना चार्ज होगा? इनसाइड तो फिर से नेगेटिव हो गया, आउटसाइड हो गया पॉजिटिव. पॉइंट बी इनसाइड पॉजिटिव, आउटसाइड क्या होगा? नेगेटिव. मैं पूरा डिटेल्स और नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा ना, प्लस 30 मिलीवोल्ट. And point C -70 millivolt. Outside positive, inside negative.
एंड ये फिर से आगे जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा ये एक डीपोलराइज्ड नॉर्म और रीपोलराइज्ड नॉर्म, हाँ एक पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया तो क्या होगा। इजी है, अगर ब्लॉक हो जाता है K प्लस तो K प्लस इफ्लक्स स्टॉप हो जाएगा, Na प्लस अगर ब्लॉक हो जाता है Na प्लस इनफ्लक्स स्टॉप हो जाएगा। तो बाहर क्या ज्यादा बढ़ेगा, अंदर क्या कम हो जाएगा, इसके हिसाब से चार्ज क्या हो जाएगा। ये पूरा एकदम सिस्टमेटिकली है, इस डायग्राम में सब आंसर है आपका। डायग्राम कंप्लीट। तो स्टेप्स क्या है, स्टेप है पहले पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यहाँ पे Na प्लस इनफ्लक्स होगा, that gives rise to polarization into depolarization. Action potential plus 30 millivolt. Depolarization will be changed into repolarization. और hyperpolarization चार्ज कितना है ना, -90 मिलीवोल्ट, वो 80 to 90 होता है, मैं यहाँ पे 90 लिख रहा हूँ, it is not necessary it should be 90, it may be 80 to 90, more than 70, right? And this is because of what, depolarization becomes repolarization because of what, K plus इफ्लक्स, ये सब पैसिव है। Now repolarization again change into polarization. मीन्स फिर से -70 में आ जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, क्या स्टार्ट होगा, ये जो -90 है फिर से -70 कैसे होगा, फिर से A प्लस तो इफ्लक्स स्टार्ट हो गया है, Na प्लस K प्लस चैनल स्टार्ट होगा, याद है ना। लेकिन ये एक्टिवली है कि पैसिवली है, हाँ ये है सीक्वेंस। एक्टिव एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, रिएक्शन पोटेंशियल। इसी वजह से चार्ज कम हो जाएगा, -90 फिर से माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा इसीलिए तो -90 से -70 हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं जाएगा तो नेगेटिव कमेगा कैसे, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, विथ लीस्ट पॉजिटिव चार्ज। और इसका और एक भी कारण है, नॉट ओनली दिस वन, Na प्लस भी स्टार्ट होगा ना, Na प्लस इनफ्लक्स भी स्टार्ट होगा कि नहीं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Na प्लस K प्लस चैनल भी होगा, प्लस
Na प्लस भी होगा, Na प्लस ये पैसिवली था ना, ये भी एक कारण, ज्वाइंट एफर्ट से ही वो -70 में आ जाता है। हाँ, supposed to be this time in millisecond, which is membrane potential, or the charge in millivolt. तो ये हो गया -70 मिलीवोल्ट, ये हो गया 0, ये हो गया +30 मिलीवोल्ट। तो फर्स्ट, आप इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन की डीपोलराइजेशन। -70 में है तो क्या बोलेंगे? नाउ Na प्लस इनफ्लक्स हुआ, Na प्लस इनफ्लक्स होके वो रीच किया किस पॉइंट में? +30, तो क्या बोलेंगे उसको? फिर K प्लस इफ्लक्स हुआ, K प्लस इफ्लक्स होने की वजह से वो आप देख सकते हैं -70 के नीचे भी आ जाता है ना, -80 -90 तक रीच करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइपरपोलराइजेशन। और इसी को तो हाइपरपोलराइजेशन बोलेंगे। एंड देन अगेन चेंज इनटू व्हाट? पोलराइजेशन। इसीलिए स्टेप मैंने पहले ही बता दिया, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, देन पोलराइजेशन। Now we are coming to the point B, that is in myelinated nerve fiber. On myelinated nerve fiber कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इन माइलिनेटेड नॉट फाइबर। कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसका खाली थ्योरी समझने से तो होता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जब हम क्वेश्चंस इस टॉपिक का करते हैं। इसीलिए जाके तुरंत उसका क्वेश्चंस कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो भी आपके स्टडी पैकेज में है रिलेटेड टू ओरिजिन एंड कंडक्शन और इम्पल्स, एक बार इसको कोशिश कर लीजिएगा आज जाके, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए। So we are coming to in case of myelinated knot fibers. इलेवेंथ का टॉपिक आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर का जो कंसेप्ट था, myelin sheath is made up of sphingolipid. Lipid is impermeable to ion channel. Lipid is, so myelin sheath will permeable to ion channels or impermeable. So where the myelin sheath will be present, the ion channels will remain inactive, suppressed. But the point where the myelin sheath is absent, node of Ranvier, वहां पे आयन चैनल्स कंटिन्यू करेगा। तो सेम प्रोसेस व्हाट जस्ट वी हैव डिस्कस्ड, सेम इवेंट, बट ओनली टेक्स प्लेस एट द पॉइंट ऑफ नोड ऑफ Ranvier। तो एक नोड से दूसरे नोड को ये वेव लाइक पास करेगा या जंपिंग लाइक, लेकिन नॉन माइलिनेटेड में क्या था, वेव लाइक। तो स्लो कंडक्शन की फास्ट कंडक्शन कौन सा, माइलिनेटेड विल बी फास्टर बिकॉज इट इज जंपिंग लाइक। एंड इवोल्यूशन में एक वर्ड पढ़े हो, सैल्टेशन, एनसीईआरटी वर्ड है। सैल्टेशन मतलब सिंगल लार्ज बिग स्टेप, single step big step is called as saltation, and that's why it is called as saltatory conduction. तो saltatory conduction क्या होगा, जंपिंग होगा, लार्ज स्टेप होगा, फास्टर होगा। तो इसीलिए व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर which is faster conduction, myelin sheath color is white, so myelinated nerve fiber white or gray, so white matter will conduct faster or gray matter, चलेंगे धीरे धीरे और अंदर। जितना हो सके जल्दी बनाइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, उसके लिए डायग्रामेटिकली आपको शो कर देते हैं, इसीलिए फास्टर करिएगा। कंडक्शन भी फास्टर है, राइटिंग भी फास्टर होना चाहिए। एनसीईआरटी मैप्स मिला है ना, रट लो उसको, बढ़िया से, असली मजा वहीं पे। बाकी सब तो मुंह माया है। मैंने गलत बोला क्या, एनसीईआरटी तो असली है, बाकी सब तो मुंह माया है। आप एनसीईआरटी को छोड़ के मोह माया के पीछे भागते हैं, जैसे हम लोग लाइफ में करते हैं, आर्टिफिशियल खुशी।
खाना पीना, घूमना, मस्ती मजाक करना, डे आउटिंग, वो सब क्या है? फॉल्स हैप्पीनेस। बस फॉर द मिनट ऑन, कुछ समय के लिए मिलता है खुशी, है कि नहीं? असली खाना, असली मजा घर के खाने में ही होता है। होटल में जाके आप XYZ मंगा के खा लो, वो कुछ टाइम के लिए, जस्ट कुछ मिनट के लिए। घर में आके खाओगे, मजा कुछ अलग है। इसीलिए असली खुशी यहीं पे है, एनसीईआरटी में। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे देखिए ये हो गया नोड ऑफ रैनवियर। तो जहां पे नोड ऑफ रैनवियर है, सिर्फ वहीं पे Na प्लस इनफ्लक्स होगा। तो फिर पॉजिटिव आयंस आउटसाइड होगा कि इनसाइड होगा? इनसाइड पॉजिटिव चार्ज, एंड आउटसाइड क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में देखिए, आउटसाइड पॉजिटिव है, इनसाइड नेगेटिव है। सेम चीज जो हम लोग पढ़े थे। तो वन नोड टू अनदर नोड, दैट विल बी passes as a jumping like man, called as saltatory conduction. This is myelin sheath and this is swan cell. याद है? swan cell nucleus. ये हो गया एक्सोप्लाज्म। This is the membrane called as neurilemma, and this is node of Ranvier. Node of Ranvier, point of the absence of myelin sheath. So as myelin sheath is impermeable or act as insulator, to ion channel. So exchange of sodium potassium occurs only at node of Ranvier. Impulse conduction, jumping like manner, called saltatory conduction. Fast. अच्छा, क्या हुआ? जहां पे सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है वो तो डिपोलराइज्ड है, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया अंदर। और सेकंड और नेक्स्ट जो नोड ऑफ रैनवियर है वो क्या है? पोलराइज्ड। वहां पे अभी सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो ये जंपिंग लाइन पास करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, सो इट इज फास्टर।
याद रख सकते हैं आप लोग, व्हाइट मैटर फास्टर होगा, ग्रे मैटर स्लो होगा कंडक्शन रेट, एज द मैग्नेटिक इज व्हाइट इन कलर. एनसीईआरटी को पढ़ के समझने के लिए, लाइन को समझने के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए. इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल्स में, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो. जब आप एनसीईआरटी पढ़े कहीं तो रुके नहीं, नॉन स्टॉप पढ़ाई हो जाए, लाइन पूरा याद हो जाए. क्योंकि वही लाइन उठाएगा आपको पूछेगा क्वेश्चंस में, स्पेशली इन द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, स्पेशली एनालॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एसेशन रीजन क्वेश्चन. जो भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन बुक से उठाएगा, एंड वो कॉमन बुक ऑल इंडिया में क्या है? एनसीईआरटी. अब उसका कंसेप्ट को समझिए. Why it is from the NCERT? Why it is not from any kind of your state books? समझे कि नहीं? अगर आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का जेई जैसे पहले होता था, वहां पे एनसीईआरटी को कोई याद ही नहीं रखता था, एनसीईआरटी को कोई एक्चुअली वैल्यू नहीं देता था. मैं आपको बोल रहा हूँ 6 साल 7 साल पहले की बात. कोई सिलेबस नहीं, नो सिलेबस, कुछ भी हो सकता. सोचो मेरा हालत क्या होगा. हम तो सब पढ़ा देते. अच्छा बोलता था क्या सर याद है, सब याद, क्योंकि आपके पास सिलेबस ही नहीं है. हाँ, यू आर लकी. नेक्स्ट में आते हैं. कंप्लीट है. नंबर सी. इलेक्ट्रिकल साइनप्स थोड़ा सा हम लिखेंगे, खाली थोड़ा सा दिखाएंगे, मेनली इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनप्स. Supposed to be, this is the pre-synaptic neuron, and this is actually post-synaptic neuron. This is pre-synaptic neuron. प्री-सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये एंड पॉइंट है. तो ये एंड पॉइंट किसको हम लोग बात कर रहे हैं? विच शुड बी दिस वन? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये साइनेप्टिक नोब है कि नहीं? एंड इसको आप क्या बोल सकते हैं? डेंड्राइट. आफ्टर साइनेप्स जो होगा वो डेंड्राइट होगा कि नहीं? नेक्स्ट न्यूरॉन, सो इट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. सो दिस इज द साइनेप्स. कौन सा साइनेप्स है ये? केमिकल साइनेप्स. And this is the fluid filled space present called as synaptic क्या है? Cleft. Synaptic cleft, fluid filled
Now this synaptic node contains number of synaptic vesicles filled with what? Neurotransmitter. Like most common neurotransmitter क्या है? Acetylcholine. So this is synaptic vesicle with neurotransmitter like your acetylcholine. नीचे क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है ना? रिसेप्टर्स प्रेजेंट. So these are called as acetylcholine as it is written there. So acetylcholine receptors protein. So acetylcholine receptor protein present in postsynaptic membrane or presynaptic membrane. Whereas synaptic vesicles will be diffuse. आप देखिए यहाँ पे synaptic vesicle क्या होगा ना? डिफ्यूज करेगा. They will be diffuse like this. ऐसे डिफ्यूज हो जाएगा. डिफ्यूज होने के लिए अब मैं आपको प्रोसेस स्टार्ट करूं. प्रोसेस ये है कि स्टिमुलस धीरे धीरे रीच किया कि नहीं? स्टिमुलस इज कैरिंग थ्रू द एक्सॉन. एक्सॉन होते हुए लास्ट में कहां पे पहुंचा? एक्सॉन टर्मिनल. एंड एक्सॉन टर्मिनल में क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल्स है, सॉरी साइनेप्टिक नोब है. नाउ जैसे ही स्टिमुलस रीच करता है एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल, immediately the calcium influx will starts. What is influx? Calcium influx. कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा. कैल्शियम इन्फ्लक्स मतलब ECF2 एक्सोप्लाज्म. समझ में आ रहा है कि नहीं? That influx of calcium will make the movement of this synaptic vesicle to downward. ये synaptic vesicle जैसे ही downward move करेगा, and these synaptic vesicles will be diffused with the presynaptic membrane or postsynaptic membrane. किस मेम्ब्रेन में ये डिफ्यूज कर रहा है? प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन. And ultimately this acetylcholine will be diffused into what? Synaptic cleft में आ गया. And synaptic cleft में आने के बाद इसको रिसीव कौन करेगा? Receptor protein present in the presynaptic or postsynaptic? And once they will receive the acetylcholine through the postsynaptic membrane and acetylcholine receptor protein, immediately the stimulus will again start, because the sodium potassium channel will again open. जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल फिर से ओपन होगा, फिर से स्टिमुलस कंटिन्यू करेगा कि नहीं? ठीक है. बट प्रॉब्लम इज हियर. आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे ये स्टिमुलस पास करते हैं फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, बिकॉज ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, बिकॉज ऑफ दिस एसिटाइलकोलिन, बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. अब क्वेश्चन आपको आएगा कि सपोज टू बी साइनेप्टिक वेसिकल खत्म हो गया, क्या हो? अगर रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? ये आपको बस समझना होगा कि फंक्शन ये है, नहीं होगा तो क्या होगा? continuous stimulus, if it is passing through the chemical synapse, continuous, it may be cause that complete exhaustion, complete use of synaptic vesicles.
अगर ये स्टिमुलस बार बार पास करेगा एक साइनप्स के थ्रू, तो ये पॉसिबिलिटी है कि साइनेप्टिक वेसिकल खत्म हो जाए, तो क्या ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कंटिन्यू करेगा? सस्पेंडेड हो जाएगा फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक फैटिग. So synaptic fatigue is associated with the chemical synapse. Let's see the electrical synapse. हाँ बाहर निकलेगा. ये जो गैप है ना सिनेप्टिक लेफ्ट, ये फ्लूइड फील्ड है, वहीं पे आएगा, फिर उसको रिसीव करेगा रिसेप्टर, देन सोडियम पोटेशियम चैनल स्टार्ट होगा, देन स्टिमुलस विल बी पासेस थ्रू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. अब क्वेश्चन और भी है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है. Why the impulse is always passes from the postsynaptic to presynaptic? Why it is from the axon to dendron? Why not it is dendron to axon? हाँ, क्योंकि दो कारण है. एक तो प्री साइनेप्टिक में साइनेप्टिक वेसिकल है जो कि पोस्ट में एब्सेंट है. सेकेंड, रिसेप्टर ओनली इन द पोस्ट साइनेप्टिक, नॉट इन द प्री. अगर ये दोनों दोनों जगह पे होता तो बाई डायरेक्शनल होता है कि यूनिडायरेक्शनल होता है. अब कहानी यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में देखिए, दिस इज वन न्यूरॉन एंड दिस इज अनदर न्यूरॉन. Supposed to be this is presynaptic neuron and this is postsynaptic neuron. Here as you can see, there is gap junctions present between the membrane of two neurons. अब याद करिए गैप जंक्शन क्या था. याद करिए गैप जंक्शन का फंक्शन क्या था? कम्युनिकेशन जंक्शन. As the gap junction is present here, gap junction तो bidirectional move करेगा ना. अरे है कि नहीं? यहाँ पे कोई प्री, यहाँ पे कोई साइनेप्टिक लेफ्ट है क्या? नहीं. गैप जंक्शन एज इट इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल साइनप्स, तो ये बाइडायरेक्शनल होगा कि यूनिडायरेक्शनल होगा? फास्टर होगा कि स्लो होगा? Because here it is not any kind of involvement of the synaptic vesicles, acetylcholine diffuse, then receive, then again sodium potassium channel will open. What actually we have discussed is exclusively belongs to chemical synapse, not applicable to. That is why it is bidirectional and faster. But electrical synapses are present very rare. Electrical synapses which are present in our body is very rare. Why so? बहुत सारे एडवांटेज है. एक तो बाइडायरेक्शनल, दूसरा है फास्टर है इन कंपैरिजन टू केमिकल साइनप्स, तीसरा ही कभी फैटिग नहीं होगा. होगा? Then why it is rarely present in your human body or biological system? बाइडायरेक्शनल एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? और क्या? दिमाग लगाइए. Yes, chemical synapse अगर है तो it is depends on the which type of chemical actually secreted by the synaptic vesicle of the presynaptic neuron, right? And that synaptic vesicle which is releasing the neurotransmitter may be excitatory, may be inhibitory. And accordingly, the postsynaptic membrane will continue to pass the stimulus either stimulatory impulse or inhibitory impulse.
डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे केमिकल साइनप्स दोनों टाइप का इंपल्स को कैरी कर सकता है, स्टिमुलेटरी हो या इनहिबिटरी हो, डिपेंड करता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनप्स का ऐसा मॉड्यूलेशन कैपेसिटी है ही नहीं, दे ओनली कैरी वन टाइप। ठीक है, तो हमारे बॉडी में मॉड्यूलेटर चाहिए कि नहीं, and that is why chemical synapse is more, electrical synapse is very rare. कैरेक्टर लिखते हैं हम लोग, किसके अंडर चलेंगे, केमिकल का ही लिख रहे हैं। साइनेप्टिक डिले मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जब ये कैरी होगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, क्योंकि एक रिलीज करेगा दूसरा रिसीव करेगा, देन एक्शन पोटेंशियल फिर से जनरेट होगा, तो टाइम डिले होगा कि नहीं इन बिटवीन द इंपल्स कंडक्शन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। लेकिन क्या ये टाइम डिले इलेक्ट्रिकल साइनप्स में एप्लीकेबल है? मैं इलेक्ट्रिकल साइनप्स का कैरेक्टर नहीं लिखूंगा, एक साथ यहीं पे लिख देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि विच इज एप्लीकेबल टू व्हाट। साइनेप्टिक डिले, टाइम डिले during your, that is impulse passes from pre to post synaptic neuron. So synaptic delay is associated with the chemical synapse only. Then synaptic fatigue with repeated impulse conduction across the synapse. It leads to the exhaustion of neurotransmitter in synaptic vesicle of presynaptic neuron. So with repeated impulse conduction across the synapse, it leads to exhaustion of neurotransmitter in synaptic vesicle for
of a presynaptic neuron leads to a temporary suspension of leads to temporary suspension of impulse conduction. It's called as synaptic fatigue. वन वे डायरेक्शन किस में होता है, बाई डायरेक्शनल किस में होता है, वो याद रहेगा. ठीक. गैप जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट है याद रहना चाहिए, इन द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और इन द केमिकल साइनैप्स. नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी का लिस्ट देंगे क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा. एंड विल स्टार्ट द ब्रेक. ठीक.